Throughout this question, the use of calculator is not permitted. It is given that the complex number -1 plus square root 3i is a root of the equation this, where k is a real constant. Write down another root of the equation. Now k is a real constant, so this is a cubic polynomial with real coefficients. तो हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर रियल कोएफिशिएंट्स के साथ हमारे पास कोई पोलिनोमियल होगी तो उसके जो नॉन रियल रूट्स हैं वो कंजुगेट पेयर की फॉर्म में होंगे. तो पहले पार्ट का आंसर जो अनदर रूट है वो सिंपल हमारे पास होगा कंजुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स रूट, दैट इज -1 minus square root 3i. So this is the another root of this given cubic polynomial. Second part, find the value of k and the third root of this equation. तो इस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में फर्दर दो चीज़ें आपसे डिमांड की गई हैं. फर्स्ट, given that this is the root of the given polynomial, find the value of k. And second, find the third root. तो हमें दो रूट्स इस पोलिनोमियल के ऑलरेडी पता हैं, एक जो गिवन है, दूसरा उसका कंजुगेट, और तीसरा रूट हमने फाइंड करना है. वेल, तो पहले हम k की वैल्यू के लिए प्रोसीड करेंगे. तो चूंकि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i इस इक्वेशन का रूट है, लिहाजा ये जो रूट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर पुट करेंगे और उनकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन इक्वेशन में यूज करके हम k फाइंड करेंगे. वेल, लेट्स से जो गिवन रूट है उसे हम x का नाम दे देते हैं, x इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i. सो दिस इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. हमने इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i मल्टीप्लाई -1 plus square root 3i. Now multiplying these two complex numbers, we get -1 into -1 plus square root 3i plus square root 3i multiply -1 plus square root 3i. -1 into -1, 1, minus square root 3i minus square root 3i and plus 3i square. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 square root 3i, और आई स्क्वेयर की जगह -1 यूज करें तो ये -3. तो दिस इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट 3i. दिस इज एक्स स्क्वेयर. ओके, वेल नाउ एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. एक्स हमारे पास था -1 प्लस स्क्वायर रूट 3i मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर हमने फाइंड किया -2 स्क्वायर रूट 3i. इन दोनों की एक्सपेंशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन ब्रैकेट्स को, तो वी गेट -1 माइनस मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर रूट 3i प्लस स्क्वायर रूट 3i मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर रूट 3i. सिंप्लीफाई करें इन्हें तो -1 इंटू -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3i minus 2 square root 3i and minus 2 3s are 6i square. सिंप्लीफाई करें, अगर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 यूजिंग आई स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, यह आ जाएगा 2 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 8. तो एक्स क्यूब हमारे पास 8 के इक्वल आ गए. नाउ since x is the root of given polynomial, so it will satisfy given equation. So put x cube equals to 8 in the given equation and x square equals to -2 square root 3i in the given equation plus 10 times the value of x is -1 plus square root 3i and plus 4 equals to 0. Now simplifying these expressions we get 8k minus 10 square root 3i minus 10 plus 10 square root 3i plus 4 equals to 0. 10 square root 3i minus plus cancel. We get 8k minus 10 minus 20 plus 4 minus 16 equals to 0. That means 8k is equal to 16 and k is equal to 2. So this is the required value of k. Now we have to find the third root of this equation. We know the value of k, we know the two roots of the given equation, and we have to find the third root of this cubic equation.
Okay, well, first, if we plug in this value of k in the given equation, the equation becomes 2x cube plus 5x square plus 10x plus 4. So we have the equation is 2x cube plus 5x square plus 10x plus 4 equals to 0. And we have the two roots. The first root is x equals to minus 1 plus square root 3I, and x equals to minus 1 minus square root 3I are the roots of this equation, are roots. So by factor theorem, x plus 1 minus square root 3I and x plus 1 plus square root 3I are factors of given equation. Let us call it equation 1, are factors of equation 1. Now, if we multiply these two linear factors, then we get a quadratic factor of the given polynomial. So multiplying these two factors, we get x plus 1 minus square root 3I multiply x plus 1 plus square root 3I. Now expanding these brackets, we get x into x plus 1 plus square root 3I plus 1 into x plus 1 plus square root 3I minus square root 3I into x plus 1 plus square root 3I. Multiplying these values, we get x square plus x plus square root 3x into I plus x plus 1 plus square root 3I minus square root 3xi minus square root 3I minus 3I square. Now simplifying these expressions, we get these two terms will be cancelled out, these two terms will also be cancelled out, and we are left with x square. X plus x is 2x, and 1 using I square equals to minus 1, we get plus 3. So 1 plus 3 is 4. This is the quadratic factor of the given polynomial. So dividing the given polynomial, this is quadratic factor of equation 1. This is the quadratic factor of equation 1. Now in order to find the third factor or the third root, simply divide the given equation by this quadratic factor. So dividing given polynomial by this quadratic factor, which is x square plus 2x plus 4, write 2x in the quotient, we get 2x cube plus 4x square plus 8x. Subtracting these expressions from the given equation, 2x cube cancel out with 2x cube, 5x square minus 4x square is x square, and 10x minus 8x is plus 2x plus 4. Now add 1 in the quotient, multiply 1 with this divisor, we get x square plus 2x plus 4. Subtracting these terms, these all terms will be cancelled out and the remainder will be 0. Since this quadratic x square plus 2x plus 4 is the factor of the given polynomial, so we always get the remainder equals to 0. If remainder is not 0, it means we are making some mistake. Double check your calculation and then proceed for the third root. Okay, well, the third rule will be obtained from this quotient. So for third root, 2x plus 1 must be equals to 0. That means x equals to minus 1 by 2. The third root is x equals to minus 1 over 2. This is the third root of this cubic equation.